Got it. And जो आएगा करेगा. So earlier what was there on the solar modules, right? From 1st April 2022, and previously क्या था कि 40% basic custom duty था plus 10% social welfare duty था on imported solar modules. तो बाहर से कोई नहीं लेगा, इंडिया वाला ही माल यूज करेंगे, राइट. एंड 25% ऑन सोलर सेल्स. पहले ये था, ओके. अभी क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, हटा दिया है. समझे मनु जी? मनु जी है कॉल में? मेरे को उल्टा लगा. नहीं, ये पहले था, तभी तो सोलर थीम इतनी चल रही थी. अभी क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन चेंज कर दी है. अभी इसने क्या किया था, सीबीडी काउंटर वेरिंग ड्यूटी लगाई थी 7.5% की. अभी जो अक्टूबर 2019 में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या करा है, रिमूव द वर्ड सोलर फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द प्रोजेक्ट इंपोर्ट रेगुलेशंस. नाउ अक्टूबर 20 को इनका रेगुलेशन आया है. दिस वाज डन बाय चेंजिंग द वर्डिंग्स ऑफ द रूल्स from all power plants and transmission projects to all power plants and transmission projects other than solar power plants or solar power projects. मर गए. अब तो धड़ाधड़ इंपोर्ट होगा मतलब. हाँ, लेकिन सर एक लाइन है जिसका मतलब समझ नहीं आ रहा इसी वाले में. फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट से फोर्थ हाउएवर, जहां से हाउएवर शुरू होता है. However, under project import regulations, companies avail themselves a concession of 7.5% duty on imported modules. मतलब जो मैं मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे सोलर बनाने के लिए, उसमें कंपनी को 7.5% का वो कंसेशनल ड्यूटी में रिबेट था. हाँ, इंपोर्टेड ड्यूटी में इंपोर्टेड मॉड्यूल लिख रहा है वो कंपनी को. करेक्ट. मतलब अगर वो इंपोर्ट करेगा दे रहा था. एक तो होता है मैन्युफैक्चरर, एक होता है रीसेलर. हाँ, तो फर्क आ गया ना. मैन्युफैक्चरर का था, रीसेलर को ट्रेडेड गुड्स होते हैं ना पीएनएल में, परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स, उसको नहीं था. अच्छा, ओके. अगर आपको एज अ रॉ मटेरियल यूज करके आगे मॉड्यूल्स बना रहे थे तो आपको 7.5% का कंसेशन मिलता था. लेकिन अगर आप उसको लेके आगे बेच रहे थे जस्ट टू इंक्रीज योर टर्नओवर एंड गेट मार्जिन ऑन इट, उसको नहीं था. पर अब तो सारी कहानी खत्म होगी. तो 40% ड्यूटी थी बेसिक कस्टम ड्यूटी और 10% सोशल वेलफेयर ड्यूटी थी. 50% ड्यूटी खत्म हो गई. 50% ड्यूटी खत्म होते ही जो बाकी कंपनियों में माल बन के सड़ रहा है उनके गोडाउनों में, वो तो डंप करेगा ही करेगा. सही बात है सर. Now this decision will affect the 10 gigawatt of solar projects and viability will go away. But sir, ये whatever they call it as local manufacturing, तो उसका तो लगे फिर. उसका अलग है ना. अभी तो ये चाइना से आ रहा था ना. बेसिकली चाइना वाले जो लोग थे वो मलेशिया से माल घुमा के वियतनाम से ला रहे थे. Not they'll dump. Your selling prices has to go down by 10%, even for glass. And this was the biggest raise which the management of the Borosil Renewables came on CNBC and addressed. And the very next day, I sold all my Borosil stock. So now he says 10 gigawatt of plants been developed by Renew Power, Iona, Fortune, Tata Power, Acme, NTPC, Aditya Birla Group, all will be affected. बट सर इसके अंदर तो इफेक्ट क्यों होगा? जैसे आज मैं मान लो लोकल ले रहा, कल मैं इंपोर्ट कर लूंगा तो मुझे तो और सस्ता माल मिलेगा. अरे तो इंडिया का प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? मैं कस्टमर हूँ, आप कस्टमर बनके सोच रहे हो, दुकानदार बनके सोच रहे हो? मैं सर सोलर प्रोजेक्ट लगाने वाला हूँ मैं. आप लगाने वाले हो ना, यू आर द बायर ना फ्रॉम दिस कंपनीज. Why will you buy the products from these companies? Rather you import ना, आपको सस्ता पड़ेगा. बिल्कुल. So these companies का business to goes down. बिल्कुल goes down, 100% goes down. That is the problem. No, but that you only see from the people who are producing those solar cells and glasses, right? But at the end,
if the total power production cost is going down, the feasibility of the project is getting better, then you have a better the feasibility of the project is going down, because these guys, the companies which he has mentioned over here, are not importing, they are manufacturing these products in-house. See, there is a difference. A person who's manufacturing the solar module in India and a person who's importing the solar module from abroad, the person who will be importing will be at benefit now. Yes, he will be at benefit. And the person who's manufacturing, who has the infrastructure and the capital invested in the business, who's manufacturing here will lose. Yeah, he will lose. मेक इन इंडिया की लग गई. मेक इन इंडिया की लग गई. सिर्फ एक लाइन चेंज करने से. No, sir, but I see in a very different way. See, it will only impact who are glass and cell manufacturers. Okay, but it will have a bigger impact. Who are module and cell manufacturers, not the glass manufacturers. Okay, cell manufacturers. But if you see a bigger picture, the cost of electricity produced by solar will be less comparatively, right? Why it will be less? Suppose a solar module cost me 1 lakh rupees, just a hypothetical example, right? And suppose 40-50% duty goes down, so this 1 lakh rupees costing goes down to 90,000 rupees, right? Glass manufacturers' duties have not been changed. So the glass manufacturer will increase the price. Then what? or if the glass manufacturer now has to decrease the price because nobody is buying over here, and if you are buying these modules from outside, might as well you get the China imported glass. अगर आपको उसमें 1-2% 5% duties ज़्यादा भी देनी पड़ी, which you save by importing these items, so why would you not buy the glass from outside? So this is a question mark over here. So we have to see how the whole balance will get disturbed. But I think the balance has to get disturbed. My tentative view is valuation should correct. And it's very obvious to assume that my total focus over here is on Borosil Renewables. Valuation should correct. This is one thing which I posted. Have a look at it, read it again, and give it your thought. Second thing which I posted, on batting averages, you have to let the big ones make up for your mistakes in this business. If you are good, you are right 6 times out of 10. If you are never going to be right 9 times out of 10, you are never going to be right 9 times out of 10. Little inch. You have to let the big ones make up for your mistakes. Big ones. We were discussing about portfolios outperforming Nifty, number of stocks in the last 1 or 2 calls. We were talking about that. One thing, it went down, it went up. One company or 2 companies or whatever the X companies which was discussed, and so many was discussed, and Raju sir is also here. Raju sold that XYZ company 3 times and bought it back 3 times. Right, Raju sir? Naam nahi lunga. Yes, sir. And now what has happened? Again, more than doubled. Yes. Second is, on turning on rocks, I think it was just looking at different companies and always thought if you looked at 10 companies, you would find one that's interesting. If you look at 20, you would find 2 which is interesting. If you look at 100, you'll find 10. The person that turns over the most stocks wins the game. यार जितने बिजनेस दिखते हैं, जितने कंपनी दिखते हैं, सारे ही अच्छे लगते हैं, सबसे प्यार हो जाता है. अभी लास्ट लाइन दोबारा समझाओ ना. द पर्सन हु टर्न्स, मतलब आपको अगर आप 5 कंपनी पढ़ रहे हो, आपको 5 की 5 अच्छी लगेगी. आप 10 कंपनी में एक 5 10 दिन लगा रहे हो, आपको सारे के सारे अच्छे लगेंगे, आप सारे लेने बैठ जाओगे. आप ये भी ले लोगे, आप वो भी लोगे. यू बड़ी डोंट वांट टू मिस एनी आइडिया. मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ऐसा भी कर लूं, मैं वैसा भी कर लूं. स्कैटर्ड हो जाएगा. लास्ट कॉन कॉल सुनना मनु जी, आप नहीं थे लास्ट कॉन कॉल में, रिकॉर्डिंग्स मैंने पोस्ट किया है, तो सुनना. इस लाइन को दोबारा से रिकनेक्ट करना. ठीक है सर. So these two paragraphs are important, and एक वो चीज थी तो जस्ट छोटा सा, just 2-3 things to talk about. बाकी वो 1.5-2 घंटे का कॉन कॉल just posted. You can have a view on that.
ठीक है, राइट सर। ओके सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो मेक इन इंडिया इनकरेज करती है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है सर? अरे सर पैसा सबको चाहिए ना, पीछे से पैसा मिल गया ना, सरकार भी तो चलानी है, चंदा भी तो चाहिए, सरकार भी तो चलानी है, चंदा भी तो चाहिए। और ये इन कंपनीज को कमाने के लिए मौका दे दिया ना, सो दे हैव मेड टन्स ऑफ मनी। नाउ द गवर्नमेंट वांट्स सम मनी, धंधा है, द गवर्नमेंट हैज डन। सो नाउ पंकज जी, बोरोसिल इन्वेस्ट का रिजल्ट लास्ट टू लास्ट कौन कॉल? पंकज जी शायद जिम में चले गए। लास्ट टू लास्ट कौन कॉल भी डिस्कस बोरोसिल इन्वेस्ट, तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट का कुछ डिस्कस किया था हमने, आपको याद है? अब क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट का, वो सोचो, एंड गो एंड रीड दैट न्यूज़पेपर कटिंग अगेन। ठीक है।